Hello viewers, I am Deepti. In my series of 50 plus MCQ for ICSE Class 10 English Literature, today my last poem is The Power of Music. So starting with its MCQs, you catch his train on hill and plain from Delhi down to Burma. Which poetic device is used in this line? Hyperbole, personification, simile or metaphor, and the correct option is A, which is hyperbole. Means उसको exaggerate करके बोलना, mentioning from Delhi to Burma. The poet uses hyperbole to suggest that Bhishma's voice is so powerful and loud that it can be heard over great distances को दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए ये word use किया गया है. Next is choose the option that lists the sequence in the correct order as it occurred in the poem The Power of Music. The bullock carts are overturned and horses line the roadside. When summer comes, we hear the hums Bhishmalochan Sharma. But Bhishmalochan, unconcerned, goes booming out his broadside. My friend, we are near our end. Oh, stop, you are singing quickly. And correct option is C, in which first comes second line. यानी कि second sentence जो है वो सबसे पहले आएगा. When summer comes, we hear the hums Bhishmalochan Sharma. Then fourth wala sentence, my friend, we are near our end. Oh, stop, you are singing quickly. The bullock carts are overturned and horses line the roadside. But Bhishmalochan, unconcerned, goes booming out his broadside. मतलब उनको तो रुकना नहीं है. Who is the poet of the poem The Power of Music? सत्यजीत रे, सुकुमार रे, सत्यपाल और सत्यकांत शर्मा. तो सुकुमार रे जो कि सत्यजीत रे के फादर हैं. They are trampled in the panic, wrought or languished, pale and sickly. What is the meaning of the word trampled in this line? Stepped heavily on something, damaged, both A and B, none of these. And here C option is correct. Both A and B are the meaning of this word. Which of the following is not an effect of Bhishmalochan Sharma's powerful singing in The Power of Music? The sky weeps tears. The trees shake and crash. The people retire amazed. The turtles whine and stare. तो यहाँ पर D option जो है वो नहीं आया. बाकी सब तो दिखाए हैं लेकिन turtles का नहीं आया. Next is what are the geographic locations mentioned in the poem The Power of Music? Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Burma. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, 2 and 3. तो 1 and 4 is the option number C. तो इसमें दिल्ली और बर्मा दोनों का नाम आया है. The poem The Power of Music has been taken from the collection of poems of which book? Bhishma Sen, Abol Tabol, Pagla Dasu और चलचित्र. So option number B is correct. Abol Tabol बहुत famous book है उनकी और उसमें से ये लिया गया है. What is the genre of the poem The Power of Music? Ballad, nonsense verse, sonnet or elegy? And the correct option is B. It is nonsense verse. In which season does Bhishmalochan hums? Summer, winter, spring, autumn. According to the poem हमें वही लिखना है. So it is A, means summer. Which literary device is used in the line? The welkin weeps to hear his screech. Alliteration, simile, hyperbole, personification. तो ये personification है क्योंकि welkin यानी sky को दिखाया गया कि sky weep कर रहा है उसकी song सुनकर. Select the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2. 1 is, but Bhishmalochan, unconcerned, goes booming out his broadside. 2 is, the fishes dive below the lake in frantic search for silence. The 2 is the cause for 1. 2 is true, 1 is false, 1 is the cause of 2. And both statements are independent of each other. The option number C is correct. 1 is the cause of statement 2. क्योंकि वो गाते जा रहे हैं इसीलिए फिशेस जो है वो और डीप जा रही हैं ताकि आवाज उनके कानों तक ना पहुंचे. Through this poem, the poet wants to suggest violence sometimes kills violence. Evil needs to be met with evil in certain unusual situations. Noise in the name of music is as bad as anything can be, or all of these. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. तो इस पोएम के द्वारा अब वायलेंस कहाँ आई आप कहोगे? अब बिली गोट का हम सीन देखेंगे इसमें तो वायलेंस हो गई है. इविल नीड्स टू मेट विद क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुन रहा तो कोई भी उसकी जो परेशानी है उसको लेकर कोई वो दुखी नहीं हुआ कि ठीक है कम से कम हमें गाना सुनने से तो मिला ना कि हम टेंशन फ्री हो गए. तो नॉइस इज द नेम ऑफ म्यूजिक. मतलब आपको अगर पता है कि आप अच्छा नहीं गाते हो फिर भी आप ऐसे गाते जा रहे हो कि जैसे आप गाना नहीं गाओगे तो दुनिया रुक जाएगी. Bhishmalochan sings as if he was a natural singer. His life was at risk.
He would get a treasure if he sings loud. He needed to defeat other singers in the contest and the correct option is B. His life was at risk. उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं नहीं गाऊंगा तो दुनिया रुक जाएगी. अब जैसे रैट के लिए मजबूरी होती है कि कुछ ना कुछ कुतरना होता है, नहीं तो उसके दांत बड़े हो जाते हैं तो उसको शायद कच कच कर कर करना पड़ता है. ऐसे उसको लगता है कि मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी. And in the sky, the feathered fly turn turtle while they are winging. What does the phrase turn turtle mean? Act like a turtle, jump like a turtle, turn upside down, become a turtle. तो यहाँ पर sky में है, ये पक्षी है, turtle नहीं है, तो turn upside down मतलब वो option number C is correct. When Bhishma Lochan sings, people do not feel calm and peaceful, shocked, confused and irritated, पैनिक यानी अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी कि क्या हो रहा है, कब खत्म होगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. काम एंड पीसफुल नहीं फील होता, बाकी सब तो फील होता है. क्वेश्चन नंबर 16. भीष्म लोचन्स लाउड सिंगिंग हैज बीन कंपेयर्ड टू द वॉइस ऑफ विच ऑफ दीज? टर्टल, बिली गोट, द फिशेस और हॉर्सेस. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बिली गोट, मींस बी. क्यों? क्योंकि पोएम में मेटाफर की तरह यूज हुआ है बेलो फॉर बेलो. Means the billy goat's forceful bleating has been compared with Lochan's loud singing के साथ उसको compare किया गया है. तो यहाँ पर हम ये वाला मेटाफर के लिए लिखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी is correct. But Bhishma Lochan, unconcerned, goes booming out his broadside. What is the meaning of booming out his broadside? Keep singing with all his might. Sings in such a loud voice did sound harsh to others. He sings in isolation. He sings melodious songs and the correct option is B. Sings in such a loud noise did sound harsh to others. Bhishma Lochan Sharma's music spreads from India to Bangladesh, throughout India, from Delhi to Burma, from Burma to Pakistan. According to the poem, option number C is correct, from Delhi to Burma. What does the phrase panic rout imply in the poem? The power of music. Solemn parade, celebration, unhappy occasion, chaotic situation. And the correct is option number D, chaotic situation. Choose the option that lists the sequence in the correct order as it occurred in the poem The Power of Music. In the sky, the feathered fly turned turtle. The trees collapse and shake. The fishes dive below the lake in the frantic search for silence. The rest brutes resent the blare. तो यहाँ पर आपने पहले देखना है किससे स्टार्ट हो रहा है, तो फोर्थ वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. सबसे पहले फोर्थ आएगा. The rest brutes resent the blare. Then the fishes dive below the lake in frantic search for silence. The trees collapse and shake. In the sky, the feathered fly turned turtle. Which of the following did not happen when people heard Bhishma Lochan singing? They got trampled. They were able to make his stop singing. They became pale and sick. They got confused. तो इनमें से कौन सा नहीं होता है? They were able to make him stop singing. क्या वो मतलब पॉसिबल था उनके लिए उसको रोक पाना? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि हमने नहीं के लिए लिखना है. अगेन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ह्यूमन लिसनर्स कैन नॉट टॉलरेट भीष्मस नॉइसी सिंगिंग. एनिमल्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट भीष्मस नॉइसी सिंगिंग. द स्काई रिमेन्स वॉचिंग केयरलेसली. बिग ट्रीज collapse अंडर द इम्पैक्ट ऑफ भीष्मास लाउड सिंगिंग. तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था, एनिमल्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिग ट्रीज कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन स्काई के लिए आया रिमेन्स वॉचिंग. नहीं, स्काई भी तो रो रहा है. तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है. स्काई रिमेन्स वॉचिंग केयरलेसली, ये ट्रू नहीं है. व्हाट इज भीष्मा लोचन्स रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल टू बी क्वाइट, यानी कि स्टॉप सिंगिंग? तो क्या उसका रिस्पॉन्स था? ही रिमेन्स अनकंसर्न्ड एंड कंटिन्यूज टू सिंग. He humbly accepts their request. He tells them to mind their own business. He tells them to beg of his own. So here option number A is correct. He remains unconcerned and continues to sing कि तुम बोलते रहो हम तो गाएंगे. Which figure of speech is used in the line that follows? The bullock carts are overturned and horses line the roadside. तो इसमें क्या दिखाई है फिगर ऑफ स्पीच? विजुअल इमेजरी, हाइपरबोल, सिमिली और एजोनेंस. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इट इज हाइपरबोल. कितना बढ़ा चढ़ा के एग्जीग्रेट करके बात को दिखाया गया है. विच साउंड इज हियर फ्रॉम ए माइल अवे? द विनिंग ऑफ द रेस्ट ब्रूट्स, tumbling of the mighty mansions, the collapse of crashing of the trees, all of the above. और इसने क्या लिखा है? फ्रॉम अ माइल अवे, यानी दूर से. तो ऑप्शन नंबर सी, द collapse or crashing of the trees. The people, dazed, retired, amazed, although they know it's well meant. This line tells that Bhishma Lochan's singing was melodious,
discordant, soothing, unbelievable. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. डिस्कॉर्डेंट मीन्स उसकी सिंगिंग जो है वो स्पॉइल्स द जनरल फीलिंग ऑफ एग्रीमेंट कि किसी को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चल रहा है. Which option among the ones given below tell us that Bhishma Lochan was passionate about singing? He is not bothered about people's reaction and sings as if his life depended on it. कि उसकी जिंदगी उसी म्यूजिक पे डिपेंड कर रही है. Bhishma was proud that trees would collapse due to his singing. क्या उसको प्राउड फील होना चाहिए? Bhishma's singing made people to plead and grumble or all of the above. So here A option is correct. He is not bothered about people's reaction and sings as if his life depended on it. Select the option that shows the correct relation between statement 1 and 2. Statement 1 is Bhishma grants the world the golden gift of silence. And second is people cry. We are going to die. Won't you stop singing? Statement 2 is the cause of 1. 2 is true, 1 is false. 1 is the cause of 2. Or both statement 1 and 2 are true and independent of each other. So here option number D is correct. Statement 1 and 2 are true and independent of each other. Bhishma grants the world the golden gift of silence. तो ये तो लोगों के ट्राई करने पे उसका रिस्पॉन्स तो नहीं था ना, ये तो बिली गोट की वजह से उनको गिफ्ट मिला था. The tone of the poem, the power of music is melodious, harsh and tortuous, humorous or saddening. And correct option is C, means humorous. Who are referred to as wretched brutes? The horses, the fishes, the bulls, all of the above. And the correct option is A, the horses. Several poems in Sukumar Ray's Abol Tabol contained which of the following? Great appreciation towards the administration, skillfully hidden criticism and satire, a moral message of how patriotism, a mysterious element of hidden dangers. And correct option is B, skillfully hidden criticism and satire. क्योंकि उस समय हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो छुपा के ही चीजों को दिखाया गया था. The satire in the poem is directed against bad and loud singing, human listeners, trees and animals, the sky and birds. And option number A is correct, bad and loud singing. Who translated the original poem Jenner Gonto to English version The Power of Music? Sukumar Ray, Satyakant Shastri, Savitri Chatterjee or Sukanta Chaudhary. And correct option is D, Sukanta Chaudhary ने original poem को English version में music Power of Music बनाया है. What kind of a person is Bhishma Lochan Sharma? Determined, stubborn, gentle, all of the above. And correct option is B, stubborn. They whine and stare with feet in the air. Whom does the poet refer to as they in the poem? The trees, the bullock carts, the wretched brutes, the feathered fly. And the correct option is C, the wretched brutes. And in the sky, the feathered fly turned turtle. Which poetic device is used in this line? Alliteration, personification, visual imagery or metaphor. And the correct option is A, alliteration. क्योंकि feathered fly और turn turtle दो बार रिपीट हुआ है इसीलिए ये alliteration है. इस पोएम में यूज होने वाले बाकी पोएटिक डिवाइसेस में भी आपको पता है मैक्सिमम हाइपरबोल यूज हुआ है और मेटाफर यूज हुआ है. हाइपरबोल कहाँ यूज हुआ है? द हॉर्सेस whine and stare with feet in air, the feathered fly turn turtle. इसमें हाइपरबोल भी यूज हो रहा है, feathered fly और turn turtle. तो ये इसके अंदर हाइपरबोल भी है बट क्योंकि हमारी ऑप्शन में हाइपरबोल नहीं है इसीलिए हमने यहाँ पर एलिट्रेशन इसको करेक्ट किया है. इसीलिए अदरवाइज पर्पसफुल एग्जेगरेशन किया गया है, लिटरली टेक्निक है जिसमें हम किसी चीज को एम्फेसिस देने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं उसको अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए. और मेटाफर में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया बेलो फिर बेलो आ गया जहां पर गोट की फोर्सफुल ब्लीटिंग को जो वो आवाज करती है उसको लोचन की लाउड सिंगिंग से कंपेयर किया है. और लास्ट में जहां गोल्डन गिफ्ट की बात हुई है तो गोल्डन गिफ्ट को मेटामॉर्फिकली कंपेयर किया गया है साइलेंस that is restored after Bhishma stopped singing, indicating how valuable and precious the silence is. कि साइलेंस कितनी प्रीशियस थी कि उसको गोल्डन गिफ्ट माना गया लास्ट में. तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुई है, ज्यादा पोएटिक डिवाइसेस में यूज नहीं हुई है. और इस जगह पर जैसे एलिट्रेशन हो गया तो बहुत ज्यादा डिवाइसेस नहीं है इसके अंदर. एज यू कैन सी इन दिस पोएम नॉनसेंस वर्ड्स ही यूज हुआ है तो इसीलिए पोएटिक डिवाइसेस में थोड़ा कम आपको मिलेंगे बट काफी हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ पोएटिक डिवाइसेस मेंशन कर दी जो आई हैं. Who comes to the rescue of all the victims of Bhishma Lochan singing? कौन आया उनको बचाने के लिए? His wife, a billy goat, a police officer, a horse. तो ये तो सबको पता है. ऑप्शन नंबर बी
Billy Goat is correct here. What happened to the rest brutes on hearing Bhishmalochan singing? क्या होता है? They raise their feet in the air, they cry out in pain, they wonder what is happening, all of the above. And all of the above वो सोचते हैं ये हो क्या रहा है, हम खड़े होके सुन रहे हैं, ये कब रुकेगा? Choose the option that lists the sequence in the correct order as it occurred in the poem The Power of Music. The welkin weeps to hear his speech. We are going to die. Oh, won't you stop your singing? The mighty mentions stumble. Bhishma soared beyond our reach. However we plead and grumble. तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कौन सा सेंटेंस बन रहा है? सेकंड वाला. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सबसे पहले सेकंड आएगा. वी आर गोइंग टू डाई. वॉन्ट यू स्टॉप योर सिंगिंग. इसके बाद सीक्वेंस में क्या है? भीष्मा सॉर्ड बियॉन्ड अवर रीच. हाउएवर वी प्लीड एंड ग्रम्बल. हम जितना मर्जी बोल लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द वेलकिन वीप्स टू हियर हिज स्पीच. इधर से स्काई का दिखा दिया. द माइटी मेंशंस स्टम्बल, फिर मेंशंस का दिखा दिया. तो 2, 4, 1, 3 इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. What is the effect of Bhishmalochan singing on the animals? They enjoy his singing. They dance to his tunes. They crowd around him to hear him sing. They feel frightened and confused. And the correct option is D. They feel frightened and confused. What happened to the birds upon hearing Bhishmalochan's loud singing? They lose control over their wings. They start to sleep while flying. They start chirping loudly. They become silent forever. Option number A is correct. They lost control over their wings. What is the original language in which the poem The Power of Music was written? Malayalam, Hindi, Bengali or Marathi? And the correct option is C, Bengali, क्योंकि सुकुमार रे खुद बंगाली हैं. Bellow answering bellow. Which is the poetic device used here? Metaphor, hyperbole, simile or visualization? तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. दिस इज अ मेटाफर, क्योंकि भीष्मलोचन की सिंगिंग को कंपेयर किया गया फोर्सफुल ब्लीटिंग जो बिली गोट की होती है उसके साथ. The people plead to Bhishmalochan that if he did not stop singing, they would start to sing louder than him, die, beat Bhishmalochan to death, run far away from his village. तो क्या कहते हैं? They would die कि हम मर जाएंगे अगर तुम बंद नहीं करोगे. And Bhishmalochan grants the word the golden gift of silence. Which poetic device is used in this line? Alliteration, personification, visual imagery or metaphor? And correct option is metaphor. The golden gift is compared metamorphically to the silence that is restored after Bhishma stops singing. जब वो रुक जाता है तो उसको golden gift कहा गया है. And mighty mentions stumble. What does stumble mean in this line? To shake vigorously, to sway with music, to fall down suddenly, to get up and start to dance with music. And correct option is to fall down suddenly. Option number C. Which animal is not referred to in the poem The Power of Music? हॉर्स, टर्टल, फिशेस, बिली गोट. कौन सा नहीं यूज हुआ? टर्टल नहीं, एनिमल नहीं दिखाया. ऑप्शन नंबर बी. द वेलकिन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वेलकिन? द स्काई और हेवन अबव, द वर्कमैन इन द फील्ड, Bhishmalochan's family members, the idols of God and goddesses. And the correct option is A, the sky or heaven above. Select the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2. 1 is he downs his horns and charges straight with bellow answering bellow. 2 is the strains of song are enhanced by the blast of brutal violence. So statement 2 is the cause of 1. 1 is true, 2 is false. 1 is the cause of 2 and both statements are independent of each other. Here option number B is correct. 1 is true and 2 is false. Option number B. And Bhishmalochan grants the word the dash. Choose the correct option to fill in the blank. Golden gift of his voice, golden gift of silence, golden gift of music, golden gift of rains. And correct option is golden gift of silence. Option number B. But now comes a billy goat, a most sagacious fellow. What is the meaning of sagacious fellow? Someone with great moral character, a fellow with great power and strength, someone who is wise and has good judgment, someone who is wild and breathless. तो यहाँ पर sagacious word क्या शो कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी. Someone who is wise and has good judgment, कि सबको लगता है कि बिली गोट ने जो किया वो बहुत अच्छा था, काबिले तारीफ था. What happened to Bhishmalochan singing when he was hit by Billy Goat? क्या हुआ? Gets low pitched and melodious, becomes breathless, gets even more high pitched, gets tossed and whirled. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? D. Get tossed and whirled. With this, I conclude my today's video and also it is the end of my 50 plus MCQ of English Literature class 10. जितनी भी poems और जितने भी आपके पास prose के chapters थे, all is over in class 10 only.
थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अब मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ. यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अदरवाइज यू कैन बिकम a member of my channel by paying ₹59. You can watch all these video, or 89 if you want the PDF of these MCQs. Thank you.